So today is the third lecture of the revision series, set 2. We have already finished last time's 7 sets. So let's start off with the 8th set, or I should say set 2 of the 7 series. So are you ready? Are all of you all ready? Just note down your marks as such, or any question you don't know. Yeah. So I've put it in the chat box. Could you start? Each one of you can start doing it, open it and start. If you have joined late, you don't have access to it, please let me know. Oh, okay. 1 minute. I'll just check. Just a minute. Yeah, now it should accept. I have changed it. Please check again. I have changed it. Please check again. It's opening, right? The link is opening. Yeah, you just have to submit it. Yeah. Two minutes more.
Please tell me which question you have found difficult. Done? Is it completed? See how much ever you can complete and tell me the questions you found tough, which is the question you really found tough. So depending on that, we can, see, I want all of you to try once because that's important. You guys have to try once. मेन चीज क्या है कि आप एक बार देख लो उस क्वेश्चन को, मेरे से पहले देख लो, दैट्स इट. Completed. 1 minute more. Those who missed it, we can do the next form, beta. Is it okay? जिनका हो गया है वो सबमिट करें. 1 minute क्लोजिंग नाउ. आप नेक्स्ट करें, जिनका ये पहला वाला मिस हो गया वो सेकंड वाला करें, ठीक है? कम ऑन, अभी तक से 12 जन ने सबमिट किया है. स्पीड गाइस. कितने आए मार्क्स, क्या क्या आए सबको? 5 4 3 2 1. Completed. Okay, so I can see a lot of students getting 3. So कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था? 3 4 बहुत हैं, तो कौन सा आपको सबसे डिफिकल्ट लगा? Can I start? Over. Last 15 seconds. Okay. ठीक है. So I'm closing it. So out of people who have attempted, 14 people have been able to attempt it in exactly 10 to 10 minutes में आपका हो गया है. देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट पड़ा. आई एम क्लोजिंग इट. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. I'm closing it right now. Closed. So now let us see क्या आया सबको, देख लेते हैं. So this is set 2, मतलब हर एक सेट 7
फॉर्म का होता है, 7 फॉर्म का एक सेट बनता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है. So let us look at this one. This is a potentiometer wire which is 100 centimeters long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series first to support one another and then in opposite direction. पहले कौन सा मेथड है ये कौन सा मेथड है? Which method is this? तो पहले आपको ये समझना है कि this is the assist and oppose method, right? पोटेंशियोमीटर के 3 मेथड्स हैं और उसमें से ये कौन सा वाला है? दिस इज द असिस्ट एंड अपोज मेथड, जिसको हम सम और डिफरेंस मेथड भी कहते हैं. सो दिस इज वेरी सिंपल. उन्होंने डायरेक्टली हमें बैलेंसिंग लेंथ भी दिया है. सो वी कैन डू दिस. आई होप यू डिड इट. दिस इज रेशियो ऑफ E1 अपॉन E2 which is L1 plus L2 upon L1 minus L2. So एक बार पहचान लिया कि ये कौन सा है, then it's very easy. So this is nothing but 50 plus 10. 50 plus 10 कितना होता है? 60 upon 50, that is 40. So what's your answer? I hope everyone got the answer is option 1. Option 1 will be the right answer. So I don't think you needed much help out here. Let's look at this question, which is based on logic gates. So to get the output 1, फॉर द फॉलोइंग सर्किट विच इज द करेक्ट चॉइस. तो ये आपको हमेशा चेक करना होता है कि मुझे आउटपुट 1 चाहिए, तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना होता है. So suppose we go as per the first option, then the first option says take A as 1, B as 0 and take C as 1. अगर आप ऐसा लेते हैं तो 1 और 0 जो है वो 1 बन जाएगा यहाँ पे, और फिर 1 और 1 बन के 1 बन जाएगा. So this was a very simple one. यहाँ हम और गेट है हमारा और इधर हमारा एंड गेट है. So the option out here, I'm sure everyone got this correct. This is the first option. I hope no doubts in this one. This question. ये सबको आया diffraction. So in a diffraction pattern due to a single slit का diffraction होता है, of width A, the first minimum is observed. So I hope in the class we have done so many times, we have learned how the diffraction pattern looks like. I hope you remember this. It's like a fading signal like this. So this is the diffraction pattern. He is saying it is observed at an angle of 30 degree when the wavelength is how much? 5000 Armstrong is incident on the slit. जब light 5000 Armstrong का और हम 30 डिग्री से उसको देखते हैं, so they are asking you what is the first secondary maxima that is observed at an angle of. So basically the path difference between the extreme rays or the first minima is given as what? What is it given as? It is first one is lambda. अगर पहला वाला lambda है तो secondary maxima, जो secondary maxima होता है, this is our maxima, main maxima, then our first minima, this is a secondary minima. So if you remember, that will coincide to how much? It will coincide to 3 lambda by 2. Yes, sin theta is lambda by a only, but that is the first minima, which is first minima को हम लिखते हैं sin theta is lambda by a. जब हम second, ये देखो ये अपना center वाला है, right? ये अपना क्या है? first minima है, तो ये वाला क्या होगा? secondary. So this is nothing but how much? 3 lambda by 2. Agreed? So therefore what we have to write? We have to write this as sin theta, or I can take it as a sin theta is equal to 3 lambda upon 2. समझ में आ रहा है ये? So what have they said? How much is our A? A is nothing but the slit. So how do we come to know this A? By looking at the angle. So as
we know that a sine theta is equal to lambda. That's the minima. So this is nothing but a sine of कितने angle पे देखा है 30 is equal to lambda. So how much is a going to be? A is going to be nothing but 2 lambda. Agreed? Because ये half हो जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 lambda हो जाएगा. That means this will become 2 lambda into sine of theta is equal to 3 lambda by 2. So यहाँ पे lambda lambda cancel हो जाएगा. So what is theta going to come as? Theta is going to be sine inverse of 3 upon 4. Correct, guys? So this will be the right answer for the third question. So कितनों को ये correct मिला था? How many people got it correct? Okay. Okay. So if you remember, we have done this pattern in class many, many times. If you keep the notebook, yeah, correct, yeah. Hmm. Hmm. तो डायफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता था बेटा कि जब हम लोग ये डायफ्रैक्शन पैटर्न लेते थे, नो ऐसे 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 हम लोग लेते थे ऐसा. सो दिस इज आवर सेंट्रल ब्राइट. आई होप यू रिमेम्बर दैट, राइट? तो हमारा ये साइड क्या होता था? दिस वुड बी लैम्बडा बाय डी and this would also be lambda by d. Then the next one would be 2 lambda by d, and this side also it would be 2 lambda by d. ऐसे चला जाता था वो, this pattern. Yeah. So, yeah, so that's what I'm trying to tell you. So this is our first minima, which is nothing but lambda by e. So this is your first minima, right? Now, when you're talking about the secondary maxima, this is your main center. This you could call as the first maxima. This will come as the second maxima. So from here to this distance you have to see. So एक ये जो पूरा होता है ये कितना होता है? 1 लैम्बडा होता है. फिर यहाँ पर हाफ ले लो, है कि नहीं? So that's why the next secondary maxima is going to be 3 lambda by 2. Got it? अभी समझ में आया? Yeah, so maxima और minima तो समझ में आ रहा है ना? It is, you're reading the question wrong, Chaitanya. It is the first minima is observed at an angle of 30 degree. तो first minima मतलब यही है ना? ये आपका first minima है, lambda by d, जिसको lambda by a बोल सकते हैं. So ये आपका first minima है. Minima, not maxima. The first minima is observed at an angle of 30 degree, and then the first secondary maximum पूछा है. Correction there. ठीक है? So first वाला minimum है और फिर maxima पूछा है बेटा. दोनों maxima नहीं है. ठीक है? इसलिए शायद गड़बड़ हो रहा है. Got it? Okay. This was the fourth question. So fourth question को देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन की कैसे है कि अल्फा पार्टिकल है ऑफ मास m with velocity v जो bombard करता है heavy nucleus को Ze. So we have to find out the closest approach. You know what is closest approach का condition? What is the closest approach का condition? Yes, पता रहना चाहिए तो ही हम ये कर सकते हैं. The condition for closest approach is half mv square is equal to k times of किसके बीच ये हो रहा है? किसके बीच ये हो रहा है? It is happening with the alpha particle
Yes, so it is 2 times Z and the nucleus of charge is Ze upon R. अब मुझे बताओ मास और R का क्या रिलेशन है? मास और R का क्या रिलेशन है? They are inversely proportional. What is it? It is inversely proportional. So when it is inversely proportional, yes, yes. When it is inversely proportional, then what should you say? Which one looks correct for you? Which one is correct then? तो वो पूछ रहे हैं कि the distance of the closest approach depends on m as. It depends on m as 1 upon m, which is inversely proportional. So the closest approach is a concept in in the chapter of nuclei. How many of you all don't know about the closest approach? So फिर then I can keep a lecture for theory. So closest approach किस किस को नहीं आता है? Okay, Aryan, you know. If you don't know, then you tell me. I will explain the theory behind this because तभी मुझे पता सी why I'm doing this, why am I asking you question, तो मुझे पता चलेगा कि क्लास को लास्ट मिनट क्या क्या डाउट्स है. आई होप यू नो अनाउंसमेंट हुआ है कि MHCET जुलाई के एंड में होगा. सो जिसको जिसको डाउट है प्लीज टेल मी. आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लोज अप्रोच. It is not difficult, it is very very easy. So basically here we are taking the kinetic energy equal to the potential energy. Now let us look at question number 5. Let us look at question number 5. There is a small signal V of t, which is V naught sine omega t, which is applied to an ideal capacitor. This is very simple. It is applied to an ideal capacitor. कैपेसिटर में कौन आगे कौन पीछे होता है? कैपेसिटर में कौन आगे कौन पीछे होता है? कैपेसिटर के लिए आपको क्या याद करने को बोला था मैंने? आइस. क्या याद करना है? आइस. सो कैपेसिटर में करंट आगे होता है, ईएमएफ पीछे होता है. बाय हाउ मच? बाय 90 डिग्री या पाई बाय 2. तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 180. रॉन्ग, क्योंकि ये प्योर कैपेसिटर है, ये आइडियल है, ये प्योर है. करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री. रॉन्ग. तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं. थर्ड कह रहा है over a full cycle the capacitor does not consume any energy from the voltage source. क्या ये सही है? यस, 100%. दो चीजें कैपेसिटर और कौन ऐसा करता है जो एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता? और कौन ऐसा करता है? कैपेसिटर तो करता ही है बिकॉज इट स्टोर्स चार्ज. यस. इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर क्या करता है? स्टोर करता है. क्या करता है? स्टोर करता है. कैपेसिटर जो है अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर. और फोर्थ वाला तो है ही नहीं, करंट और वोल्टेज इन फेज है ही नहीं. सो द राइट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन नंबर 3. दैट इज द कैपेसिटर or does not consume any voltage. ये कंज्यूम कब करेगा? एनीबडी? ये कंज्यूम कब करेगा? अगर इसके साथ क्या होता तो कंजम्पशन होता? ये आइडियल कैपेसिटर दिया है यहाँ पे. क्या होना चाहिए इसके साथ कि पावर की कंजम्पशन या एनर्जी की कंजम्पशन? वेरी गुड. कोमल से रेजिस्टर होना चाहिए. चैतन्य से आर सी है. अगर आर सी आ गया तो रेजिस्टर कंजम्पशन करेगा. सो फर्स्ट 5 क्वेश्चन सबको क्लियर है? कैन आई गो टू द नेक्स्ट 5? First 5 clear. Are you ready for the next 5? Okay, 1 minute. So जिनका first set नहीं हुआ वो second set करे. Sending the second set to everybody. Please start. Click on the link in the chat box and please start.
set 2. Your time starts now. I want all of you to try. All of you should try. If you have not got, I will send you the link. But everyone must try. See how much marks you're getting. See where you're getting stuck up.
Okay, Utsav, that's good. Okay, तृप्ति, कौन सा वाला गलत हो रहा है? राजपाल, ओके प्रिया, गलत कौन सा हो रहा है? कहाँ पर स्टकअप हो रहे हैं? सो आई एम कीपिंग अ नोट ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसकी थियरी अगर आपको चाहिए आप बताएं, तो उसके हिसाब से आई कैन प्रिपेयर, सो आई कैन गेट द स्लाइड्स फॉर द सेम. ओके, आई एम टेकिंग इट डाउन. देखते हैं कितने लोगों ने अभी तक आंसर किया. टाइम लिमिट 24 लोगों ने आंसर किया अभी तक, सो स्पीड इज क्वाइट गुड. लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट. ओके, तो चेक करें, अभी चेक कर ले. सो टाइम अप, क्लोजिंग द सेशन. ओके, सो 28 पीपल हैव सबमिटेड. अभी देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे. दैट्स गुड आर्यन, कीप इट अप. तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन ये वाला था क्या? यस. सो कंसिडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल. व्हाट इज द करंट then flowing through? Consider the junction diode as ideal. What is the current that is flowing through AB? पहले हमें हमेशा चेक करना होता है कि डायोड फॉरवर्ड में है क्या रिवर्स में है. सो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में है, बिकॉज ए टर्मिनल +4 पे है और बी टर्मिनल -6 पर है. सो एज इट इज एन आइडियल देयर विल बी करंट फ्लो. और अगर ऐसा हुआ, देन व्हाट इज करंट इक्वल टू? करंट पूछा है उन्होंने. करंट इज नथिंग बट डिफरेंस इन वोल्टेज, क्योंकि डायोड का हमेशा डिफरेंस इन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर लेना पड़ता है. तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे लेते हैं? इट इज VA माइनस VB. सो इट इज VA माइनस ऑफ -6 अपॉन R कितना है? 1 किलो, मतलब 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा? दिस आराम से it will come 10⁻⁻² ampere and therefore 3 is your right answer. So हमेशा याद रखना, जब आप डायोड में करंट ढूंढते हैं तो हमेशा हम डिफरेंस इन द वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर लेना है. याद रहेगा. आगे बढ़ते हुए, ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था. अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस A carries a current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic field at the radial distances A/2 and 2A. So इसके लिए इनसाइड का फॉर्मूला पता रहना चाहिए. आप समझ रहे हैं, आउटसाइड का फॉर्मूला सबको पता है, बट उन्होंने दो डिस्टेंसेस दिया है. एक है A/2, मतलब A से कम, यानी कि ये जो है ये ट्यूब वाला है. दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन. यानी कि ये वायर जो है, इसका जो रेडियस है, हम अगर इसको ए लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो A/2 पर है. मतलब एक पॉइंट अंदर है A/2 और दूसरा पॉइंट बाहर है A डिस्टेंस पर. आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एक पॉइंट बाहर है 2A, सॉरी, और एक पॉइंट जो है अंदर है, दैट इज A/2. समझ में आ रहा है? सो नाउ इफ इट इज आउटसाइड, एवरीवन नोज द फॉर्मूला. अगर आउटसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता है. इट इज μ0I अपॉन 2πr. अगर आउटसाइड है तो ये बहुत इजी है. इट इज μ0I अपॉन 2π. R is how much? R is how much?
to A. Correct? So it is not difficult. But if it is inside, anybody knows what is the formula? If it is inside, pipe wala case hai ye. So inside रहेगा, then it is mu naught I upon, what should it be? It is mu naught I 2 pi r square into जो distance आपने लिया है, that is small r. So यहाँ पर inside का क्या हो जाएगा? Mu naught I upon 2 pi r square. यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं, then it is as good as taking it as r by 2. Or if you take it as a square, then it is as good as taking it a by 2. So here we will have to take it as, I'm going to take it as r by 2. Is that okay? So हमें क्या मिल रहा है? This r will get cancelled. You will get mu naught I upon 2 pi into यहाँ पर भी आपको 2r ही मिलेगा. That is 2a ही मिलेगा. अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, a और r से कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा जो क्वेश्चन का a है वही हमारा r है. दोनों केस में आप देखेंगे अगर हम रेशियो निकालेंगे इनसाइड टू आउटसाइड, हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. सो द मेन थिंग इज यू शुड नो द फॉर्मूला. इनसाइड वी मोस्टली डोंट नो, आउटसाइड वी ऑलवेज नो. आउटसाइड हमने हमेशा ढूंढा है क्योंकि हमने जो भी आज तक वायर्स लिए हैं, दे हैड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो यहाँ पर देयरफॉर द आंसर वाज 1:1. सो हाउ मेनी ऑफ यू न्यू द फॉर्मूला फॉर दिस? गेस वर्क लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग एक्चुअली सॉल्व करते हैं उनकी बात. हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूला आना चाहिए बेटा. हाँ, दैट्स व्हाट आई थॉट, दैट दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट. सो दिस क्वेश्चंस वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं. Question number 9. Given the value of the Rydberg's constant 10 to the power 7, the wave number of the last line of the Balmer series is, last line मतलब, last line मतलब series limit. Very good, मतलब infinity. यानी कि 1 by lambda is equal to Rydberg's constant 1 upon 2 का square minus 1 upon infinity का square. Do you agree? Now you tell me, 1 upon lambda को क्या कहते हैं हम लोग? वेव नंबर. 1 upon lambda को हम लोग क्या कहते हैं? वेव नंबर. So obviously what is the answer for this? Rydberg's constant is 10 to the power 7 upon 4. 1 by 4 is 0.25. Therefore, the answer out here is option 4. This is the right answer for question number 9. Question number 10 बहुत ही simple था मेरे हिसाब से. Question number 10, you are going to tell me क्या है भाई इसका आंसर? The magnetic susceptibility is negative for, किसके लिए वो negative है? Yes, very good. The answer should be option 2. For diamagnetic, it is negative. So this was set 2. Can we go ahead with set 3? Yes, correct. Set 2. Going ahead with set 3. I hope all of you are ready. I want you to do this faster. Can you try this in 5 minutes? Please try. I have put it. Please take it from the chat box. You may need a 2 more minutes
especially for some questions. Please try. Everyone must try. कौन सा क्वेश्चन बेटा? यही है ना लास्ट? अच्छा, एक और था क्या उसके नीचे? ओ आई फॉरगॉट द 10th. ओ ओके ओके, आई विल डू इट, आई विल डू इट. ये कर लो फिर मैं करती हूँ. यस, मैं करती हूँ बेटा. इलेक्ट्रॉन वाला मैं करती हूँ. मेरे स्लाइड में है वो, तो ऑब्वियसली आई वुड हैव कम टू इट एनी. 'नेक्स्ट सेट कर ले फिर मैं करती हूँ, दोनों साथ में लेक्चर. वो लास्ट वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा. यस. 7 को क्या हुआ श्वेता? 9 8 7. 7 कौन सा है? ये वाला? ये 6 था ना? ये 6 है, ये 7 है. कुछ नहीं है इसमें श्वेता. लेट द अदर्स डू एंड देन वी विल कम टू इट वंस अगेन. सो इसमें कुछ नहीं था. कैन यू प्लीज डू अभी का शीट फटाफट, क्योंकि यू विल नॉट गेट टू अटेम्प्ट इट. ये शीट कर लो पहले, फिर बाद में बात करते हैं. ठीक है. प्लीज अटेम्प्ट द फॉर्म राइट नाउ. आर्यन, अश्वेता, प्लीज आप नेक्स्ट फॉर्म को करें, फिर हम ये फॉर्म के बारे में वापस डिस्कस करेंगे. 2 minutes. I hope you're trying the questions. I hope you're getting the answers by doing trial. I hope you're not guessing the questions.
Last 1 minute. Done, everybody? Completed, everybody? Okay, so I missed out one question. Can I go back to it? So how many were able to complete in 7 minutes? 25 people were able to complete. Okay, that's good. So I'm closing it. Okay, 26. Somebody submitted just now. Okay. So now let's check. Yeah. So what was the doubt, Ashweta, in this? You had a doubt. It is just that we are looking at 2 points. According to the question, the magnetic field was asked at inside A by 2 and outside. So you cannot treat it as a मतलब उसको एक infinite thin wire के जैसा treat नहीं कर सकते. So ये pipe है, you know. So if it is inside, you must have heard about the hollow pipe. तो hollow pipe के ऊपर questions आते हैं. तो जिसमें if it is inside, then you have to use this particular formula. That is mu naught upon mu naught I upon 2 pi r square into the distance, that is small r. So that is equal to a by 2. And capital R यहाँ पर a लिया है हमने. So that's what happened here. So this we had done and I missed out this one. So in this question, now if you look at this particular question, electron of mass m and a photon have the same energy. Electron is a particle, photon, yes, is a particle as well as a part of radiation. The ratio of the de Broglie's wavelength associated with them is. So if you remember the formula for electron, you have to remember the formula lambda of electron. Lambda of electron kya hai? Lambda of electron is nothing but h upon root of 2m into kinetic energy. Kinetic energy. याद है ये formula? So the lambda of an electron is h upon under root of 2m into kinetic energy, while the photon का energy क्या होता है? h nu, which is nothing but hc upon lambda. So from this, if I have to take a ratio, so lambda of a photon is going to be what? It is going to be hc upon e. Now I have to remove a ratio of lambda 1 upon lambda 2, or I have to take the ratio of the de Broglie's wavelength associated with them. So what will I get? I will get lambda of electron upon lambda of photon is equal to h upon root of 2me into kinetic energy into what will come here? This will come as, divide करना है तो ये ऊपर जाएगा, so this will come as E upon HC. तो H और H cancel हो जाएगा, so you should get something like 1 upon C. And if you take the under root completely inside, then this will become like kinetic energy का square.
upon 2m into energy. So this will become nothing but 1 upon c under root of E upon 2m. So your correct answer out here will be nothing but, कौन सा option correct है यहाँ पर? Your second option is the correct answer. I repeat once again, पहले हम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखते हैं. Lambda of electron is h upon under root of 2m into kinetic energy. I hope you know how we got this. Right? याद है ना? Half mv square is equal to ev डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. Half mv square is equal to ev डाल रहे हैं, and that's how we are getting this. So therefore, and what is lambda? C is equal to nu lambda. So now from this lambda of electron, lambda of electron and lambda of photon निकाल रहे हैं. Lambda of electron is h upon, yeah, it is half mv square is equal to ev से निकाल रहे हैं, और यहाँ पर lambda of photon निकाल रहे हैं. दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और जब हम कंपेयर करेंगे तो एच एच हमारा कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट लेना है, सो ई स्क्वायर अपॉन 2m आएगा, और एक यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैंने यहाँ ई सब्स्टिट्यूट किया है. So we will get this answer, which is to option, matching to option 2. Any doubt or difficulty in this question? Any doubt or difficulty in this question? Next question, this is what you are doing right now. The charge flowing through a resistance R varies with time as Q is equal to AT minus BT square, where A and B are positive constants. The total heat produced in R is. So first and foremost, how much is the charge given to us? The charge is given as AT minus BT square. Now, what is current? Heat निकालना है, H निकालना है. H is nothing but I square RT. So first we will find out what is I. I is nothing but dq upon dt. Derivative निकालना है. This will come as A minus 2bt. This will come as A minus 2bt. इसका ये मतलब है कि ये मिला, करंट मिला. This is our first step. This is our second step. So ये क्या है? A minus 2bt. अब हमें H निकालना है. Now you tell me how should I start? H जो है is nothing but, now why we can't do it directly? Because now whenever these big equations are given, that means there is a time, because they are saying that it varies as a time. So जब ऐसा लिखा रहता है, it varies as with time t, that means the heat that we remove across this should be integration from 0 to t. Agar with 2t bola, so it should be 0 to 2t. So therefore, this question we have to do like this. We have to write H is therefore equal to integration from 0 to t time of I square RT. You understood? Now here it is with respect to time, so we can say dt. Now what will happen? What will happen? Let me substitute. What is my I? It is A minus 2bt. So this will become 0 to t A minus 2bt का क्या हो रहा है? Square into R into dt. So this had to be, solved. This entire thing had to be solved. So this is like saying that we are getting, so this question was a little difficult for the students' perspective. So what are we trying to tell here? So when your current is equal to I is equal to A minus 2bt, then A and B are nothing but what? Positive constants.
And if I assume that my current is 0, then I will get the relation. That is, if I assume my current is 0, then 0 is equal to A minus 2 BT. That means my T is nothing but A upon 2B. Right? So the time जो 0 to T बोल रहे हैं, उसका हमें क्या मिलता है? लिमिट मिलता है. So don't get scared of the question. It is basically giving us the limit. हमारा जो टाइम है वो कितना है? It is from 0 to A upon 2B. That means what we are getting here is that this time now is nothing but A by 2B. कुछ लोग दिमाग में रख ले रहेगा, हम तो ये छोड़ ही रहे हैं. But still you should try. This is not difficult. जब भी एक equation दिया रहता है, then we should find out what is the limit. And once you find out the limit, you just have to substitute in that particular equation. That is T is equal to A upon 2B. So after you do this, what is going to happen when you open this bracket? What should I write? What should I write? What should I write? Okay, you got stuck over here. Yeah. So this T आपको समझा है? T is equal to A upon 2B. Yeah. So basically you have to substitute this in this particular big equation. You have to solve this equation. You have to expand the entire bracket. आपको expansion करके upper limit और lower limit निकालना है, and the answer would come as A cube R upon 6B. So it's a whole lot of equation there. So I don't think that anybody must have got this. Have you, anybody of you got it, or you just, this is the right answer out here. But इसको expand करना है. So I'm going to leave it to you कि ये पूरा expand करके उसका equation निकालना है. Yes. So R always remains outside. R will come out. Yes. और फिर उसको open करके आपको solve करना था with upper limit and lower limit. So I'm not going to waste my time on it. Let's look at the NPN transistor. How many of you got this one? This is very simple. What is voltage gain? Voltage gain is equal to, yes, what is it? Voltage gain is equal to current gain into resistance gain, which is beta. Voltage gain is equal to current gain into the resistance gain. An NPN transistor has a load resistance of how much? It has a load resistance of how much? 800 ohms is connected across the collector circuit, and the voltage drop across it is 0.8 volt. If the current amplification factor is 0.96, now current amplification factor का मतलब होता है आपका beta, right? So what is your beta? Your beta is nothing but your current gain, which is 0.96. And if the input resistance is 192, the voltage gain and the power gain of the amplifier will be. First tell me, do you have an input resistance? Yes. क्या है आपका input resistance? आपका input resistance है 192. आपका लोड रेजिस्टेंस, लोड मतलब क्या होता है? आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है? 800 ohms. सो कैन आई फाइंड रेजिस्टेंस गेन? ये आपका बीटा क्या होता है? करंट गेन. इफ यू वांट, आई विल जस्ट नॉट राइट लाइक दिस. I will write it as the resistance gain is R output upon R input. This way it is better. Is it okay? So your R naught upon R input, and you know your voltage gain. So can I find out the voltage gain? Can I find out the voltage gain? So what is R naught? R naught is output resistance. That is, how much is your output resistance? 800 upon what is your input resistance? 192 into what is your current gain? It is 0.96. So how much is this going to come to?
How much is this coming to? Yes, it comes to 4. So this is your voltage gain. Now what is power? Power हमेशा क्या होता है? Power is हमेशा VI. So what is power gain? It is going to be current gain into voltage gain. How much is it? Current gain into voltage gain. So it is 4 into 0.96. 4 into 0.96. 4 is your voltage gain and 0.96 is your beta, which is the current gain of a common emitter amplifier. This comes to 3.84 if I'm not mistaken. And therefore your correct answer will be option 2. Option 2 is your correct answer. So don't forget the formula. Voltage gain is R naught upon Ri into beta, and power gain is voltage gain into current gain. Now we're talking about a square loop. So we have two structures here. In this we have two structures. एक क्या है? एक आपका square loop है जो यहाँ पर है, and this is the magnet. This is the wire out here. So इसका जो magnetic field रहेगा, it will 100% go inside this. It will influence this. But जो effect आपको A B पर आएगा, वो ज्यादा इफेक्ट होगा कंपेयर टू CD, क्योंकि CD का डिस्टेंस ज्यादा है और AB जो है इस वायर के बहुत करीब है एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2. जब हम फोर्स यहाँ और यहाँ चेक करते हैं, मतलब BC और AD में ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब बचता है सिर्फ दो फोर्स. So because the current is going in the same direction, you can see that they are going in the same direction here. There will be a force of attraction between the wire and AB, and there will be a force of repulsion between CD and the wire. You agree? So the net force, if I want to write net force acting on this, can I say the force acting by AB is going to be greater compared to the force that is going to be acting by CD? क्योंकि CD एक तो दूर है और AB उसके करीब है. सो दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है. अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फोर्स का फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस? L/2. एग्रीड? माइनस ऑफ what will happen? FCD is going to be mu naught upon 4 pi 2 I into I upon what is the distance? What should I consider the distance? Anybody? CD. कितने distance पे है wire से? So the total distance is L plus L/2. And therefore this is nothing but 3L/2. So दोनों के बीच का जो distance है वो 3L/2 लेना है. Now we can take things common out here. So what we are going to get? We will get here as mu naught upon 4 pi 2I हमें कॉमन मिल रहा है. आई थिंक दैट मच इज कॉमन. ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा? 2/L माइनस 2/3L. This will become 2 mu naught I upon 4 pi. What will come inside the bracket? What will come inside the bracket? फोर अपॉन 3L आएगा इनसाइड द ब्रैकेट. यस. सो 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 2 म्यू नॉट I अपॉन
व्हाट शुड आई गेट? बच क्या रहा है? 3 पाई एल बच रहा है. दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ और उन्होंने फोर्स पूछा था, तो वी हैव मिस्ड एल एवरीवेयर. सो एवरीवेयर देयर विल बी एल आल्सो बिकॉज दिस इज फोर्स. और ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है इट इज ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इधर एक एल भी आएगा. सो दैट एल इज देयर. सो हियर आल्सो दैट एल इज देयर. So this L also gets cancelled and therefore it is 2 mu naught I upon 3 pi. Because हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है which I have used here, which is mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon x. I hope everyone remembers this. तो हमें फोर्स पूछा है इसलिए हम ये जो L है उसको भी हमें यहाँ शिफ्ट करना है. So that is the reason the option, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है? टू इज द राइट आंसर. ये कौन सा वाला क्वेश्चन था? 13th. ये 11 था, ये 12 था. ओके करेक्ट ना? ये 11 था ना? ये 11 था, ये 12 था, ये 13 था. Let us look at the 14th question. Out of the following options, which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave? Propagating is a moving electromagnetic field. So ये propagating वाला जो है इसका आंसर क्या होगा? Propagating. Yes, absolutely. An accelerating charge only can do that. An accelerating charge. So answer was option 1. क्योंकि stationary charge electric field बना सकता है. You understand? So if it is accelerating, then only it can produce an electromagnetic wave. A charge moving at constant velocity will not produce, and a chargeless particle is a neutral particle. So there is no way of producing. So if you remember, this comes from the concept of displacement current. So, you know, it is displacement plus this producing electromagnetic waves concept. So this was electromagnetic waves ka pehla, matlab, if you remember the scientist who came out with that experiment, the first scientist who came out with this experiment was, who came out with the experiment of electromagnetic waves? I had revised something last time. The scientist is Hertz. हर्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये किया था. यस, बट उसका पूरा इक्वेशन मैक्सवेल ने किया था. एंड आई थिंक आई हैड गिवन दिस आल्सो. दिस इज द 15th क्वेश्चन. वाज दिस द 15th क्वेश्चन? Yes. So the 15th question says if the magnitude of the sum of two vectors is equal to the magnitude of the differences of the two vectors. Can you tell me what is the sum of two vectors I should write? How should I write it? I should write it as a square plus b square plus 2ab cos theta. This should be equal to, what should I write here? A square plus b square. Now what should I write after this? What should I write after this? डिफरेंस के लिए क्या लेते हैं? यस, -2ab cos theta. गॉट इट? तो यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे क्या आएगा? 2 cos theta आएगा.
which is going to be equal to 0. So what is theta going to be? Theta is going to be how much angle? Yes, 90 degrees. That's why the option out here was option 3. So were you able to do these questions? You know your difficulty level. Have you understood the solution from 11 to 15? Can I give you one last set? Can I give you one last set? Any doubts here? Any doubt here? Maybe I can give you the last set and not give you the solution right now, so that you will be able to. Let's see the last set. Let's finish off the last set. थोड़ा सस्पेंस भी रखते हैं. एक लास्ट सेट देखते हैं कि किसको किसमें है दम. Please answer set number 4. Will you answer? Or should I keep it for next time? Okay. So some people are saying aaj ke liye bas, because some of the questions were really tedious. I agree. So can you please try these questions once again on your own, and please let me know if any difficulty. Okay, then I will end the session. Thank you for joining. We will go ahead with set number 4 in the next lecture. Do you have any difficulty in any of the questions that were discussed? हमने 3 set complete किया आज. We have 7 sets in every group. So these are my group questions. Now they'll become little tough as we go. So in the next 7, you may not find the questions similar. They will be little fresh ones. So it will be better that we mix both the category, the first 2 sessions. Okay. So thank you so much for joining me. And if you have any doubt or difficulty, we can discuss right now. Others can leave. Anybody, any doubt? Yeah, Aryan, I can do that. Yeah, I can mix it up also. I can give you from, yeah, we can do that. Thank you and good night. CET का form, I think so, my dear Michelle.